students, today we will learn about SN2 reaction mechanism. Now, what is SN2 reaction? S stand for substitution, N stand for nucleophilic. So it is a nucleophilic substitution, and nucleophilic substitution that follow second order kinetics are called SN2 reaction mechanism. Students, मेरे पास यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है, and when मिथाइल क्लोराइड is treated with OH minus 1, तो होगा क्या? OH minus 1 will come out and Cl minus 1 will leave, and product we are getting is methanol and Cl minus 1. Negatively charged material or those compound who has lone pair of electron are called nucleophile, or they are called attacking reagent. जिसके ऊपर अटैक होगा that is called substrate, और जो बाहर निकल कर आता है शायद हम उसको क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप. क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप. Now what happens here in methyl chloride? Electronegativity of halogen is high, so bonding electron pair shifted towards halogen, so it occupy partial negative charge and carbon occupy partial positive charge. Now OH minus 1 try to attack on this carbon. मेरी बात ध्यान से आपको समझनी है. In methyl chloride, remaining 3 atoms are hydrogen. बहुत ही छोटा एटम है, तो आसानी से OH minus 1 ये कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है. अगर ये OH minus 1 कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पर यहां हेलोजन भी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड से साथ जुड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली दे विल फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट. पार्शियली कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और पार्शियली कार्बन एंड OH का बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा. हियर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग both phenomena occur simultaneously. Here partial negative charge and here partial positive charge. Or you can say that for a little time here carbon undergo pentavalent stage, little pentavalent stage. धीरे धीरे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड 100% ब्रेक हो जाएगा, और धीरे धीरे कार्बन एंड OH का बॉन्ड 100% क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. Here we have to break sigma bond. Sigma bond is a very strong bond, so it's very difficult to break it. So here breaking of bond, that reaction is very slow, and for the slow reaction may I write rate of reaction depends upon alkyl halide as well as OH minus 1. So in SN2 reaction, rate of reaction depends on both the concentration of OH minus 1 as well as concentration of alkyl halide. So with respect to alkyl halide is a first order, with respect to OH minus 1 is a first order. Both the reactant are involved in a source plate. Therefore, 1 plus 1, may I say that it's a second order reaction. Very simple.
आसान है ये। OH -1 एंटर हो गया, Cl -1 निकल गया, तो इट्स सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड वी हैड वेरियस रिएक्शन इन प्रीवियस लेक्चर्स, substitution by Cl -1 and substitution by OH -1 and substitution by alkoxide ion. But here we have two options. Either substitution proceed through SN1 or it proceed through SN2. Here we had taken SN2. So let's check what are the characteristics of SN2 reaction. First concept for SN2 reaction, it is a second order reaction. Yes, it is a second order reaction. Why it is a second order reaction? Because in slow step reaction both OH -1 as well as alkyl halide got involved. With respect to alkyl halide, it's a first order, and with respect to OH -1, it is a first order. So 1 plus 1, it is a 2, and therefore it is a second order reaction. So first point, it is a second order reaction. Second point, it is carried out in a aprotic solvent. You know what is protic solvent and aprotic solvent. So first point, it's a second order reaction. Second, it is carried out in aprotic solvent like acetone, DMSO, acetonitrile or DMF. So this is our second step. You all know what is first step. It's a second order kinetics. Two molecule is required, nucleophile OH -1 as well as alkyl halide. With respect to alkyl halide, it's a first order, and with respect to OH -1, it is a second. It is favored by aprotic solvent. Third, one step transition. पहले ही स्टेप में आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगा, तो हियर ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व. तो our third point, transition state. Fourth point, which one is preferred? Methyl, primary, secondary and tertiary. यहां पर तीन छोटे छोटे हाइड्रोजन है. जितना बल्कीनेस कम उतना OH -1 का अटैक क्या होगा, पावरफुल. जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप गेट इंट्रोड्यूस, बल्कीनेस बढ़ता जाएगा एंड OH -1 को ये कार्बन के ऊपर अटैक करने में क्या हो सकती है, परेशानी. तो फॉर SN2 रिएक्शन, methyl primary, secondary and tertiary, less the steric hindrance, faster will be the reaction. मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो इट विल प्रिफर SN2 mechanism, and tertiary alkyl halide least preferred SN2, that means it preferred SN1 mechanism. Second, strong nucleophile is required. Here carbon surrounded by other three atoms and has a tetrahedral structure, so it's very difficult to attack on tetrahedrally carbon. So for SN2 reaction we need a strong electrophile. Next, inversion of configuration. If I have dextrorotatory in product, I will get levorotatory. अगर हमारा रिएक्टेंट प्लस है तो आपको क्या मिल सकता है, माइनस इन्वर्जन, और माइनस है तो आपको क्या मिल सकता है, प्लस. तो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ SN2 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. जरा इस बात को हम यहां पर समझेंगे. ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड एंड Cl is present on right hand side. OH -1 attack from the left hand side. It will form transition state. Final product में
OH वो पोजीशन कभी नहीं लेगा जहां पर Cl है, वो एग्जैक्ट Cl की अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अगर वो Cl की अपोजिट डायरेक्शन में आता है, therefore it is called inversion of configuration. ऑलवेज आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट SN2 मैकेनिज्म। फिर से देखते हैं SN2 मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, and when it is treated with OH minus 1, Cl get replaced by OH, and I have ethyl chloride, and when it is treated with NaOH aqueous, we get ethanol. तो आप बता सकते हो कि इन दोनों में फास्टर रिएक्शन में कौन जाएगा। तो यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप है, वेरी बल्की ग्रुप, यहां पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो दिस विल अंडरगो फास्टर फॉर SN2 रिएक्शन। वैसे ये टर्शियरी है तो वो क्या प्रिफर करेगा, SN1। तो आपको पता चल चुका है कि क्या है आपका रेट, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो 4 to 5 points you have to remember for SN2 mechanism. First, it follows second order kinetics. With respect to alkyl halide, first order. With respect to OH minus 1, it's a first order to total second order. Stereochemistry is a second point. Complete stereochemical inversion. Priority, methyl, primary, secondary and tertiary. Favored by aprotic solvent, transition state is involved and strong nucleophile is required for SN2 mechanism. Okay, please read it.